I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing, and I'm sure all of you must be keeping in good health. We all know taking good care of our skin is important for more than just our appearance. As the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. A fungal infection is quite common on our skin or nails, or many times on our scalp. It could be due to fungus, yeast, or mold. Mild fungal infections can look like a rash. It can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Sachin Kumar, who is joining us live from Delhi to enlighten us on the topic of patient education and fungal management. Dr. Sachin Kumar is MBBS, DVT, DNB, hair, skin, and STD clinical dermatologist. He has many years of experience in this field and currently he is practicing at Karuna Hospital, Delhi. Today, Dr. Sachin Kumar will share with us on patient education on fungal management. A very warm welcome to you, Dr. Sachin. So, Dr. As today we are going to talk about fungal infection. First of all, we would like to know what is fungal infection, what are those body parts which are more prone to fungal infections, etc. Fungal infection is a widespread disease. It is a very common infection which occurs in the hot and humid temperature. It is caused by Candida albicans or uh, many others like trichophytans. Okay, it mainly affects those areas of our body where there is a more prevalent of sweating. It has more prevalent sweating in that area, like in our rural areas, in thighs, under the breast. These are the areas which are commonly affected by the fungus. It occurs because of the sweating. Right. Is the main cause. Right. So those body parts where there is more sweating, moisture is intact, no, ventilation, we can say, and there it is more prone to have fungal infection. So, doctor, we often say, especially in medical field, that prevention is better than cure. Anyway, we can prevent having fungal infections. Yeah, we have to prevent this by we can use very loose cloths and cotton cloths. We have to take care of those areas which are very prone to getting wet. So we keep on looking at those areas and keep drying those areas. We can use dusting powder for those areas also. And other is we have to have take care of our nails also, because if we each from one areas to other areas, it can get transferred by the nails also. Right. So we need to take these precautionary measures, and still, in case we have fungal infection, please go and consult a qualified dermatologist. Now, Dr. Sachin, what normally happens whenever we have any kind of infection or allergy, especially on our skin, rather than going directly to a dermatologist, we normally go for home remedies or DIYs or any nearby chemist shop where we normally get a topical application, a tube, a cream, and we keep on applying it. I'm sure you also get patients who have already done a lot, experimented a lot with their infection or allergies, and then comes to you. What is your take? How good or bad is going for over-the-counter medication or home remedies, etc.? Do they work in case of fungal infection? When you are going to use over the counter medications and the person is not a dermatologist, or you are just getting it from any chemist, then most of those medications contain steroids, and steroids has a very bad effect on the fungal infection. Initially it shows the that you are getting improvement, but as with time you will see that even the fungus is getting resistance from the conventional treatment. So it is very important and better to go to dermatologist for proper treatment. Even the time which treatment time which we can get in 2 to 4 weeks, it can get extended up to 3 to 4 months in such cases.
So it is having very devastating effect on the normal fungal infection. Right. And that is the reason we are continuously emphasizing on the fact that in case you get fungal infection, don't waste your time on over the counter medication, over the counter topical application, or home remedies or DIYs. Please go directly to a qualified dermatologist, get the treatment, get it done, and you will definitely get relief. Now, doctor, a very common factor again associated with fungal infection is reoccurrence. We see in a lot of cases that fungus gets back. Now, what is the most common cause for that? Why fungal infection keeps on, affecting us? Yeah. First, recurrences. What are the causes of recurrences? If a patient is not taking proper medications, or if he is not stick to the treatment, then it occurs. You have to follow not only medications but also the common hygiene maintenance is also very important in such cases. So sometimes what happens, a patient takes medicines for 7 days, and he thinks that now I am fine. But no, some spores might be left there, and if you stop those medicines in between, then those spores are again going to grow into the fungus, and it will cause fungal infection again. And if we stop medicines in between, then there is one more problem of medicines getting resistant, fungus is getting resistant from the medicine. So it is very important that we must take proper treatment. We must take total course of the treatment. It can vary from 2 weeks to 2 to 8 weeks, but in most of the cases, if we take proper treatment, 90% patient get relief from the fungus. Right. So it's a very important takeaway. Two things for sure. First, you need to follow the preventive measures. You need to follow it for lifetime if you have had fungal infection. Secondly, go to a qualified dermat, take treatment, and complete the dose, complete the treatment. As Dr. Sachin very well explained, it is such a common tendency. We'll follow the prescription for first 1 week or 10 days religiously, and then because we get some relief from the signs and symptoms, we stop the medication without even informing the doctor. This is just not done. You need to complete the treatment, and of course, getting in, being in touch with your doctor is really important. To trust your doctor, that's equally important. The doctor, as you said, that fungal infection has the tendency of spreading. Others can also get fungal infection. Now, in case we are in a family and one member gets infected by fungal infection, what are the things that the other members should consider, take account of, so that they don't catch fungal infection? Yeah, it is very important. I often tell my patients that you must wash your clothes separately and use your clothes separately. Don't use same clothes. No other members would use the cloth which they are using, like a towel or any other cloth which is earlier used by a fungal patient. So it is better first to uh, wash their clothes separately, and even I tell them to iron your clothes uh, in a better way, so that even the fungus, if any fungal element is present in the cloth, it should be removed from heating. Okay, so it is very important that they should separate their clothing from the others. So one thing that we need to remember: do not share your towels or bed sheets, pillowcases, etc., with somebody who is infected with fungus. Secondly, wash your clothes separately. And one major thing that the doctor has also told us and is continuously telling us is to get it treated. So one who is infected need to go and get it treated. So that's equally important. Now, doctor, how important is immunity? If a person is diabetic, or say
and have other, immune issues with which his or her immunity is compromised, how vulnerable that person is towards fungal infection. Yeah. Immunity, if a person is having autoimmune disorders like diabetes or any other like HIV, etc., in such cases, he is too much vulnerable for fungal infection, because it is seen that such type of patients are having different type of fungal infection at different organs. So if they ever see any lesion related to some fungal like candidiasis or any tinea or anything like genital fungal infection, then he must visit a dermatologist as early as possible, as only research from the doing research from the OTC products are going to have a very bad effect in case of those infection. So one must be very careful if he is immunocompromised to take a treatment as early as possible, because in case of immunocompromised also we can treat fungal infection very effectively. Right. Now, doctor, when a patient comes to you with fungal infection, for proper diagnosis, are there any tests that you normally recommend, or just by physical or clinical investigation, you're sure that this is fungal infection, even if the patient have taken, a topical application for a longer time? Okay. When such type of patients come who has taken already treatment from some other places, or some they have applied steroids, then generally we take the history of the treatment, and then clinically we can diagnose the case. But if there is any confusion about the case, we can go for culture. We take the skin and dissolve it into 10% KVH, and we can easily see the fungal spores and fungal elements under the microscope. Okay. And what are the treatment options available, doctor, for fungal infection? Yeah, treatment options are available both in case of both as a topical as well as oral medicines. In oral medicines, we have itraconazole, we have fluconazole, these are azoles, we have grisofulvin, we are having terbinafine, like medicines. These are the common medicines which are used daily by the dermatologist, and most of these oral medicines are effective. In topical treatment, we can use ketoconazole creams, azole creams like ketoconazole, sertaconazole, and terbinafine cream are also can also be used. Then we have amlorphine, newer salt coming. There are many other salts are also coming, but these are the most commonly used topical applications. Okay. Now, doctor, we would also like you to shed some light over fungal infection of nails. Who are more prone or at risk of having fungal infection of nails? How it looks like, and how much time it takes to treat? Yeah. Fungal infection in nails are common among the those persons whose work is most commonly related with trauma as well as water. Okay, and it is also most common in diabetic patients. So what we see that at the we see the change in color of the nail, both in it can occur in your hand nails or in foot nails, but there is discoloration, means there is change in the color. Proper color is changing into some kind like whitish or in greenish manner, and we can there are treatments of fungal infection, or it is very effective in case of hand and nails. For hand, we have to treat the patient for at least 3 months, and for the foot region we have to treat the patient for more than 6 months. Okay. Many times we go for, say, parlor or saloon treatments like manicure, pedicure. If proper hygiene is not maintained there, is there a chance to catch fungal infection from there of nails? Yeah, it can occur if hygiene is not maintained, then it can occur in nails also, because if
earlier a patient was having fungal infection and same thing was used to some normal person, or if you get somehow any trauma, slight trauma, then it can Mhm. get transferred from one to another also. Okay. Now, doctor, fungal infection can affect the scalp as well. Again, who all are at risk and how to deal with it? Okay. In case of scalp fungal infection, same treatment can be used, but the mostly we have to use some antifungal uh, shampoos also. That is important, and that shampoo can be used twice in a day, twice in a week, and 5 minutes application is very important for the treatment of fungal infection in scalp. And oral medications like terbinafine and grisofulvin can also be given in case of if it is more widespread. Okay. So, doctor, is dandruff also a type of fungal infection? Dandruff is actually not a fungal infection. It is only the dried up sebum. But what happens in those sebum, that dried sebum, sometimes fungus starts growing, and then it causes fungal infection. So, as per, dandruff is not a fungal infection, but most commonly we see both occurring at the same time. Okay. And how does scalp fungal infection looks like, doctor? Scalp fungal infection, it generally we see that most commonly it happens in the children, and in such cases we can see that there is loss of hairs, itching. Sometimes it appears like simple bumps also. In some cases which are having dandruff also, you can see after the removal of the hair, we can see there are circular lesions on the scalp also. Okay. So, how is the treatment done in case of scalp fungal infection, doctor, and how much time it normally takes to heal? Scalp fungal infection, if we are giving a person grisofulvin, then they have to take it for 2 to 4 months. Okay. It takes 2 to 4 months nearly. Okay. Many people apply oil on scalp. It's a very old tradition to apply oil on scalp. Just in case a person is infected with fungus on the scalp, is it a good idea to apply oil then? If a person is having fungal infection with seborrheic dermatitis, then Mhm. he must avoid using oils. But if he is having only fungal infection, then I don't think oil has any problem with that. But in case of Okay. seborrheic dermatitis, definitely he has to avoid the oil. Fair enough. We are getting so many questions from our viewers. I'll take them one by one. Tina Bhargav is here, and her question is कि जो पुराने कपड़े हैं, क्या उन्हें बार-बार पहनने से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? Can reuse of old clothes also cause fungal infection? नो, देखिए, अगर आप कोई क्लोथ्स काफी दिनों से आपने रख रखा है और किसी डैम्प एरिया में है, हॉट या ह्यूमिड क्लाइमेट के में हो सकता है कि उस पे फंगल का ग्रोथ हो जाए. इन सच जी. केसेस यू हैव टू वॉश दैट क्लोथ एंड यू हैव टू आयरन इट प्रॉपरली. So that is important to have iron it properly before using the clothes. Okay. So I'll have a similar question I'll like to add on with this. In this weather where we are experiencing rains in most part of our countries, we don't see sun for many days in many parts. And of course, proper drying of cloth under the sun is not possible many a times. And we get that dampness that, it's slightly wet before we wear it. Again, what would you suggest, doctor? Can it lead to fungal infection? Yeah, it can lead to fungal infection. So when patient come to me, I always tell them to press it or iron it so that even the slight moisture should be removed from the cloth. And ironing is very important in case of if you are having or you are prone to the fungal infection.
ओके, राइट। दीपक सक्सेना हमारे साथ है। उनका सवाल है कि मेरे भाई को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो हम क्या प्रिकॉशंस लें जिससे दूसरे फैमिली मेंबर्स को ये ना हो। हालांकि इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है दीपक ने हमारा सेशन बाद में देखना शुरू किया है। डॉक्टर, इस पर आप एक बार फिर अपनी बात रखना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। अगर अगर फैमिली में किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो एक तो उनके कपड़ों को अलग कर दीजिए, प्लस उनके कपड़ों को जब भी धोना है अच्छे से गर्म पानी में धोना है, और धोने के बाद अच्छी तरह से सुखाकर दोनों तरफ से प्रेस कर कर वो यूज करेंगे। और वो कभी भी जब तक उनको एक्टिव फंगल इन्फेक्शन है किसी और का कपड़ा यूज नहीं करना है उन्हें, ये ध्यान देना है। और वो हमेशा प्रॉपर कॉटन के कपड़े यूज करेंगे, जीन्स या टाइट फिटिंग क्लोथ्स एकदम नहीं यूज करेंगे। बिल्कुल, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए दीपक जी, और ये भी सुनिश्चित कीजिए कि आपके जो भाई हैं जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले और ट्रीटमेंट पूरा करें। सोना शर्मा हमारे साथ हैं। क्या फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो नेल्स हैं वो येलो हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं? जी हाँ, जी हाँ। जब भी नेल्स में फंगल इन्फेक्शन होता है तो शुरुआत तो ये एक नेल से होती है, एक नाखून से होती है। और इसमें जो होता है कि वो जनरली होती है जो कि आगे की तरफ से, मतलब व्हाट वी कॉल इट डिस्टल डिस्टल पार्ट से फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है, जिसमें आप देखोगे कि हल्का-हल्का येलोइश कलर या हल्का ग्रीनिश कलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और वो धीरे-धीरे फिर फैलते हुए पूरे नेल को कवर कर लेता है। इन सच केसेस अगर आपका एक नेल भी इन्वॉल्व हुआ है तो आप तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। वो जितनी जल्दी आपके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे उतना जल्दी नेल का जो फंगल है वो चला जाएगा आपके नाखून से। बिल्कुल। नेल से जुड़ा चूंकि सवाल है डॉक्टर, एक और सवाल फंगल इन्फेक्शन का मैं पूछना चाहूंगी, पैरों से संबंधित। कई बार उससे टो नेल भी इन्फेक्टेड होता है या पैरों में, फुट में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, और वो प्रॉब्लम है जिन्हें बहुत ज्यादा पैरों में पसीना आता है, लेकिन इस तरह का ऑफिस एनवायरनमेंट है कि लंबे लंबे वक्त तक जूते मोजे सब पहनने हैं, और वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें फंगल इन्फेक्शन ना हो? देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी आप नहाते हो या फिर आप गीले में आपका पैर चला जाता है, तो इन सच केसेस क्या होती है कि आपके फुट के जो लास्ट दो फिंगर वेब्स हैं उसमें पानी रह जाता है। तो आपको किसी भी आपको ये ध्यान देना है कि उन दोनों वेब्स को ड्राई रखना है। सेकेंड टाइम है कि अगर आप सॉक्स यूज कर रहे हो तो प्लीज पहले तो आपको कॉटन के सॉक्स यूज करने हैं, एंड आफ्टर, और उस कॉटन के सॉक्स को कोशिश करना है कि डेली हमको वॉश कर लेना और अच्छे से उसको ड्राई अप करके उसके बाद ही यूज करना है। ये सब आप ध्यान दे सकते हैं। और आप एक काम और भी कर सकते हो कि डस्टिंग पाउडर आप अपने सॉक्स में यूज कर सकते हो, उसको यूज करके तो तब सॉक्स आप पहन सकते हो। ये हम लोग लोकली जगहों पे अक्सर बता देते हैं कि आप सॉक्स में डस्टिंग पाउडर लगाकर और यूज कर लो, तो इससे भी काफी फायदा होता है। बिल्कुल, और जब भी मौका मिले तब अपने जूते मोजे उतार कर थोड़ी देर पैरों में हवा लगने दें, खासकर वो लोग जो लंबे-लंबे वक़्त तक जूते मोजे पहनकर रहते हैं। तनिष्का राजौरिया हमारे साथ हैं। वो पूछना चाह रही है कि क्या पेड़-पौधों से भी फंगल इन्फेक्शन फैलता है? एक और आम सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पेट्स से, जो डोमेस्टिक पेट्स हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उनसे भी फंगल इन्फेक्शन फैलता है? देखिए फंगल इन्फेक्शन में जो फंगस होता है वो तो हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पाया जाता है, चाहे वो हुँ, ट्रीज हो, हमारा खुद का बॉडी है, अगर हम अभी भी बॉडी में सर्च करें तो उसमें फंगस मिल जाएगा। बट तो जी, इस तरह से तो वो हर जगह पे होता ही है। अगर पेट्स हैं वो नीचे घूम रहे हैं तो उनको भी फंगस का स्पोर्स आ ही सकते हैं, डस्ट के थ्रू आ जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि उससे आपके बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। बट अगर आपका बॉडी प्रोन है फंगल का, लाइक आप बहुत ज़्यादा गीला रहते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़ा पहनते हो, आपको थोड़ी सी भी इचिंग हुई तो आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने चले गए, तो ये सब भी और कारण है जिसके कारण आपको फंगस हो सकता है। तो इट इज़ बेटर कि आप अगर पेट्स रखे हुए हैं तो पेट्स को भी अच्छे से साफ सुथरा रखना है। पेड़ पौधे हैं तो आपको, आप पेड़ पौधे से तो ऐसे जनरली नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पेड़ पे अगर फंगस हो रखा है तो हमें कैसे हो जाएगा। बट हुँ। इतना है कि अगर आप पेड़ पे चढ़ते हो या फिर कुछ ऐसा काम करते हो तो आकर तुरंत अच्छे से वॉश कर लेना है, कपड़ों को अपना वॉश करने के लिए दे दिया कीजिए। बिल्कुल। तो जो प्रिकॉशंस है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि हम उन्हें फ़ॉलो करें। और अगर फंगल इन्फेक्शन कभी हुआ है, फिर तो और ज़रूरी हो जाता है कि हम बिल्कुल ध्यान से इन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इन्हें फ़ॉलो करें।
तानी हमारे साथ है, उनका सवाल है कि स्विमिंग पूल में जब हम जाते हैं स्विमिंग क्लासेस के लिए, तो किन बातों का ध्यान हम रखें जिससे हमको फंगल इन्फेक्शन ना हो? क्योंकि कई बार स्विमिंग पूल से फंगल इन्फेक्शन की खबरें भी मिलती हैं। या एक तो अगर आप स्विमिंग पूल जाते हो तो वहाँ तो प्रॉपर ट्रीटेड वाटर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान देना कि वाटर हमेशा एक पार्टिकुलर टाइम के बाद चेंज, वो लोग चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी अदर स्विमर जो स्विमिंग के लिए आ रहे हैं उनको फंगल इन्फेक्शन है तो अवॉइड करना है, कि उनको अलाउ नहीं करना है कि आप फंगल ये करेंगे। आप जब भी जाते हो आप अपना कपड़ा लेकर जाओ, आप वहाँ का क्लोथ्स यूज मत किया करो, ये सब ध्यान देना है। प्लस जब भी आप स्विमिंग पूल से भी बाहर आते हो तो अपने जो भी वेट हुए हुए कपड़े हैं उनको तुरंत ही हटा देना है। और हमेशा वहाँ पे जो है बॉडी को अच्छे से सुखाकर आप अच्छे वाले कपड़ा पहनकर निकलोगे, कभी भी वेट कपड़े में नहीं रहना है। बिल्कुल, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। कुछ हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर फंगल इन्फेक्शन है, तो क्या हम स्विमिंग करने जा सकते हैं? अ, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड स्विमिंग, क्योंकि आप स्विमिंग करने जाते हो तो बहुत काफ़ी देर तक आप वाटर में रह सकते हो। और वाटर जो है वो फंगस के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है कि जिससे कि वो फैलता है। मतलब बॉडी में भी अगर वाटर ज़्यादा रहेगा तो स्किन पे अगर वाटर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे वो फैलने का चांसेस रहता है। इसलिए आप बेटर है कि अवॉइड करना चाहिए अगर स्विमिंग करने जाना है तो, इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन। जैसे डॉक्टर शुरुआत में भी आपने कहा कि ग्रॉइन एरिया में, जेनाइटल्स में बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शन होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट कई बार एक्यूमुलेट होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, या इस मौसम में ख़ास तौर पे हम कहें तो कपड़े ठीक से सूखते नहीं हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है फंगल इन्फेक्शन का। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हिचकिचाहट की वजह से दे डोंट कम अप एंड शो टू अ डॉक्टर, दे नॉर्मली डोंट टॉक अबाउट इट, और बहुत लंबे समय तक वो सफ़र करते रहते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ज़रूरी है कि फंगल इन्फेक्शन भले ही वो प्राइवेट एरिया का हो, वो भी हम डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ और सही ट्रीटमेंट लें? या अगर आपको इचिंग हो रही है, एक तो ये आप सोशल कहीं पे भी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, आपको इचिंग होगी, आप इचिंग करोगे तो आपको बुरा लगेगा ही। एक तो सबसे बड़ी हुँ, प्रॉब्लम ये हो जाती है। दूसरी होती क्या है कि अगर आप फंगल इन्फेक्शन को ज़्यादा दिन तक बढ़ा कर रखे रहोगे और आप किसी से नहीं मिलोगे तो धीरे-धीरे वो फैलता जाएगा, क्योंकि इसका एक ऐसा टेंडेंसी है कि पहले ये छोटा-सा एक दाने की तरह होगा और ये फिर धीरे-धीरे फैल-फैल कर पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। तो अल्टीमेटली आज न कल तो लोगों को दिखने ही लगेगा कि आपको फंगस हो रखा है। तो इट इज़ बेटर, प्लस आपसे आपके फैमिली मेंबर्स को ना हो जाए, किसी दूसरे को ना हुँ, हो जाए। आप कहीं पे भी किसी सोशल गैदरिंग में जाओगे या किसी दूसरे फैमिली मेंबर्स के यहाँ जाते हो तो उनको ना फैल जाए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके इनिशियल ट्रीटमेंट में ही आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लो, ताकि आपका फंगस बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल, कि जितनी जल्दी आप बिल्कुल, ट्रीटमेंट लो। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट को पूरा होने देंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। फ़िरोज़ खान हमारे साथ है, वो पूछ रहे हैं कि क्या फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद कोई स्कार, कोई दाग छोड़ के जाता है क्या? फंगल इन्फेक्शन होने के बाद कोई स्कार तो नहीं होता है, अगर वहाँ पे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो तो स्कारिंग के हुँ, चांसेस कम होते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे थोड़ा पिगमेंटेशन ब्लैकनिंग रह जाता है। तो दैट इज द टेंडेंसी ऑफ आवर स्किन, कि अगर हमारे स्किन में कुछ भी रेड होगा तो वो ब्लैक रह जाता है। प्लस जो हमारा रूरल एरिया है जहाँ पे वो ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है, वो ऐसे भी वार्म एरियाज हैं हमारे बॉडी के, तो उन सब जगहों पे थोड़ा सा ब्लैकनेस रह जाता है। बट ब्लैकनेस इज नॉट ए प्रॉब्लम कि अगेन आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस अपना टेक केयर करना है कि हाँ आपकी बॉडी है जिनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप रेगुलर ट्रीटमेंट उसका टेक केयर करना है। आप एंटी फंगल ट्यूब्स रख सकते हो कि भाई किसी भी दिन आपको नाइट में थोड़ा सा भी लगा कि इचिंग है तो आप ट्यूब यूज कर सकते हो, ट्यूब लगा लिया। बट इट शुड बी हुँ, ए प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन ट्यूब, ये जरूरी है। तो ये ध्यान बिल्कुल। देना है इसमें। पूजा विश्वकर्मा पूछ रही हैं, क्या टेस्ट के लिए, डायग्नोसिस के लिए स्किन का सैंपल लिया जाता है? No, for fungal infection, superficial fungal infection, we don't take skin biopsy sample. We only use a scraping from the disease area. That is simple scraping, not any skin sample, skin ओके। biopsy sample.
Dr. Sachin, before we conclude the whole session, before we wind up, any take home message for our viewers? Yeah. Fungal infection, India is sitting on the atom bomb of fungal infection. So it is better to take care of our body. Our environment is hot and humid, and most of us are prone to the fungal infection. Now we are using mostly clothes which are of Western style, and those clothes are not meant for our uh, country's environment. So it is better we should avoid using tight and fitting clothes. We should not take mostly. I just want to tell people that they are using some body supplement in case of they go to gym. So better avoid those things also. Don't take any over the counter medicines for fungal infection because it may cause resistance to the disease. So it is better if you feel that you are having some rashes or itching in your fold areas, then meet your dermatologist, take proper treatment, get relieved, and enjoy your life. Thank you. Thank you so very much, Dr. Sachin Kumar. It was wonderful talking to you, sir. Thank you for your valuable time, and it has been quite an informative session for our viewers. We really look forward for many more such sessions in coming times with you. Thank you very much. Okay. Okay. Thank you. Thank you. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, Instagram. Thank you and have a great day ahead. Goodbye.